6 questions on the given in the assignment. Everybody please write down sound, theory and assignment. Please write down. Hurry up. Open your notebooks and write the heading along with date. Must mention the date. Let me admit the other sections. Yes, in the meet. Okay. So dear students, what will be our procedure? Look here. There are various questions, and while solving the question, I will make the basics of your paper. If there will be the requirement of the basics, first the basics will be made, then the question will be done. Okay? So everybody, please read the first question. And I have the names of the students. I may call anybody. Let me ask one student from Amerson section. Smart Singh. Amerson बच्चे. Ahan Garg. Ahan Garg. Who is Ahan Garg in this Amerson? Sir, Ahan is absent. Samrat is present. Samrat come in the front. Samrat, bete, please read the first question. Statement of first. How is sound produced? First option by applying force on an object. Second option by the vibrating of object. Third by heating an object. Fourth by mixing different frequencies. Very nice. Samrat. Answer absent. Samrat. Very energetic. Why? Read the question very loudly. For section I am in the first question which is sound is produced by. Let me tell you what are the options and you will pick up. He said sound can be produced by applying force on the object. अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आवाज कह रहा है आवाज पैदा करने के लिए किसी भी चीज की कंपन होना जरूरी है. इधर गया इधर गया इधर गया एंड सो ऑन. वाइब्रेशन जरूरी है. थर्ड ऑप्शन में बोलता है आवाज पैदा करने के लिए किसी चीज को गर्म करना जरूरी है फ्लेम पे, हीट अप. और यहां करना है वाइब्रेशन. और यहां कह रहा है फोर्स अप्लाई करो. और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी ये है एक फ्रीक्वेंसी ये है, इन दोनों को मिक्स कर दो तो आवाज पैदा हो जाएगी, साउंड पैदा हो जाएगी. तो बेटे आप मेरे को बताओ फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड सही है या थर्ड सही है या फोर्थ सही. विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1? एनीबॉडी? अब इसमें आपने मेरे को पार्टिसिपेट कैसे करना है. जो बच्चे सोचते हैं सर फर्स्ट ऑप्शन सही है तो वन फिंगर खड़ी करेंगे. जो बच्चे सोचते हैं सेकंड ऑप्शन सही है वो डबल फिंगर ऐसे विक्ट्री का साइन. जो थर्ड ऑप्शन हीटिंग वाला वो थ्री फिंगर खड़ी करेंगे ऐसे. शाबाश. टेल मी द आंसर. टेल मी द आंसर. टेल मी द आंसर. डी नेट बिल्कुल. बटलर शाबाश. करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर. अरिस्टोटल करेक्ट आंसर. Emerson भी correct answer. Alessandro students are not raising the hand. Which Alessandro students? Second कह रहे हैं. Arvindo. Arvindo students no answer. Arvindo students no answer. Only one section not giving answer. Okay, okay, very good. All the students maximum have given the correct answer. The answer is बच्चे sound is always produced by the vibrating body. लिख लो. Sound is always produced by the vibrating body. शाबाश.
Sound is always second option. Question number 1, B option is correct. B option, second option. अब आपको मैं एक बात बताऊं बच्चे, मेरे से एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि सर आपने बोला कंपन करती हुई चीज से आवाज पैदा होती है, तो आप मेरे को ये बताओ क्या हर कांपती हुई चीज आवाज पैदा करेगी? हर कांपती हुई चीज? आप ही बताओ पहले, चलो आपसे पूछता हूं। अभी अभी टीचर ने बोला फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड a body should be vibrating. It means sound is produced from the vibrators. Now let me put the question in the reverse manner. Whether every vibrator will produce the sound or not? शाबाश, कौन जवाब देगा? Yes or no? Whether every vibrator will produce sound or not? एक बच्चा बटलर में है, डेयरिंग ओनली वन स्टूडेंट। आ जाओ बेटे, ग्रीन टी शर्ट, बटलर, ग्रीन टी शर्ट, स्पेक्स वाला बच्चा। बेटे मैं पूछ रहा हूं, हर कंपन करने वाली चीज, क्या हर कंपन करने वाली चीज पैदा करेगी आवाज? सर नो। नो। क्यों बता सकते हो वाई? ये आंसर सही। आंसर इज करेक्ट दैट एवरी वाइब्रेटर कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड। कोई आंसर बता सकते हो वाई? जो बच्चा इतने सेक्शनों में से इसका वाई बता देगा ना, वो सबसे बेस्ट बच्चा है, मोस्ट ब्रिलियंट। जो ये बता देगा आवाज कांपती हुई चीजों से पैदा होती है, लेकिन हर कांपती हुई चीज आवाज पैदा नहीं कर सकती, कुछ करेंगी कुछ नहीं करेंगी। शाबाश। हु विल टेल? हु विल टेल? हु विल टेल? हु विल टेल? Descartes, no one. Arvindo, no one. Dennett, no one. Butler, no one. Aristotle, no one. Alessandro, no one. Emerson, no one. कोई नहीं बता पा रहे। तो बेटे मैं आपको बताता हूं, आप शाबाश। योर अटेंशन, ध्यान से समझ लेना आज। दिस इज योर वाइब्रेटिंग बॉडी, ओके? आप कह सकते हो मेटल का स्केल है और इट वाइब्रेट्स, इट गोज टू दिस पोजीशन and from extreme position to another extreme position and back to the mean position. This way it's keep on vibrating like this. So whatever the teacher has shown presently, this is known as one vibration, one oscillation, you can also say one vibration. And to complete one vibration, how much time is taken? How much time is taken to complete one vibration? Please note that from your wristwatches. Whatever this time will be, that is represented by a capital T. It is called time period, और its unit is second. So इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर ये जो आपने बताया है कंपन करती हुई चीज मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन टू सिमेट्रिकली अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू द मीन पोजीशन, ये जो आपने वन ऑसिलेशन दिखाई है, इसको कवर करने के लिए जितना टाइम कंज्यूम कर लेगा वाइब्रेटर, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। आंसर इज यस। और एक और टाइम पीरियड पता लग जाए तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता लगेगी। क्या पता लगेगी बच्चे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? एच जेड, हर्ट्स। टाइम की यूनिट क्या होती है? एस, सेकंड। ओके, अब क्या करना है टीचर ने? अब सबसे खास बात बताने लगे हैं। जो वाइब्रेटर का वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच बीच में रहेगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेटर ही आवाज पैदा करेगा। वो वाइब्रेटर ही इंसान के कानों के लिए साउंड पैदा करेगा, इंसान के लिए।
ओके। और जो इससे बाहर फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट वाइब्रेट करेगा, जैसे कोई बच्चा बोले सर कोई अगर वाइब्रेटर 16 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करे, 16 हर्ट्ज, तो मैं कहूंगा बेटे देखो ये जो ऑडियो रेंज है ना ह्यूमन बॉडी के लिए, उससे बाहर हो गया ना, 20 से भी पहले हो गया 60। तो जब कोई वाइब्रेटर इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा तो हमें वो वाइब्रेट करता दिखेगा, लेकिन उसमें से आवाज आती हुई नहीं सुनेगी। एक बच्चा बोलता है सर अगर कोई वाइब्रेटर 20500 पे वाइब्रेट करे उसकी आवाज सुनाई देगी? तो मैं कहूंगा बेटे देखो इसकी वैल्यू 20,000 से भी ज्यादा हो गया, ये भी बाहर चला गया। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हमारे इंसान के कानों को जो सुनने की काबिलियत है उससे बाहर चले गई हैं। तो ना तो हमें ये सुनाई देगी, ना तो हमें ये सुनाई देगी। इसका मतलब अब बच्चे आंसर क्या देंगे? सर जो वाइब्रेटर वाइब्रेट करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर रखेगा उसी से आवाज पैदा होगी, सारे वाइब्रेटर से आवाज पैदा नहीं होगी। तो इफ इन द पेपर क्वेश्चन कम्स whether every vibrator produces sound, your answer should be although source of sound is a vibrator, but every vibrator cannot be the source of sound. Only that vibrator will produce the sound whose frequency of vibration lies between 20 hertz to 20,000 hertz, and this is known as, what is this? ऑडियो रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। ऑडियो रेंज लिख लो बच्चे, पूछ लेते हैं पेपर में। ऑडियो रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर बार बार आप ह्यूमन इंसान का नाम ले रहे हो, तो क्या अगर इससे बाहर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो और जानवरों को सुन जाती है? यस, किसी किसी जानवर को सुन जाती है। जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे वाली वाइब्रेटर से निकलेगी जो आवाज, वो एलिफेंट को सुन जाती है, एलिफेंट को सुन जाती है। और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की आवाज डॉग्स को सुन जाती है, तो एनिमल्स को सुन सकती है। हम साउंड उसको बोलते हैं जो इंसान को सुने, इंसान को, इंसान के कान इसके सुन सकते, ठीक है। और एक बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब अगर कोई वाइब्रेटर वाइब्रेट करे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो मान लो 20 हर्ट्ज से कम है, तो 20 हर्ट्ज से कम है, तो जो वो कंपन कर रहा होगा वाइब्रेशन से, उससे निकलने वाली वेव्स को क्या हम साउंड नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो सर क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। लिख लो सभी बच्चे, infrasonic waves have frequency less than 20 hertz। दूसरा बच्चा बोलता है सर अगर कोई वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जब वो कंपन करेगा और उसके कंपन होने से वेव्स निकलेंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होगी, तो आवाज सुनेगी नहीं सुनेगी। सर उन वेव्स को हम साउंड नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो फिर बोलेंगे क्या सर उनको? उनको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। नोट कर लो, अल्ट्रासोनिक वेव्स। गॉट इट? एक बच्चा कहता सर मेरे को समझ आ गया। क्या समझ आ गया? सर आपके कहने का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच बीच में रहेगी वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन की, तो ही वो साउंड कही जाएगी इंसानों के लिए। और अगर उससे कम है तो इंफ्रासोनिक वेव्स, अगर उससे ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। जिन बच्चों को ये तीनों बातें समझ आ गई हैं प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? सर देखना जिन बच्चों को दोनों हाथ नहीं, जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड खड़ा करना है।
जिनको समझ आ गया राइट हैंड, और जो दोनों हाथ नहीं खड़ा करना चाहते वो क्लास में खड़े हो जाए, बस मैंने उनको बैठने नहीं देना एज ए पनिशमेंट। शाबाश, फैसला करो वेदर आपको ये तीनों बातें समझ आ गई कि नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ किसका हाथ नीचे तो नहीं है। ओके, डाउन, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। डाउन डाउन बेटे, थोड़ा सा टीचर को हार्ड बोलना पड़ता है ताकि वो चेक कर सके मेरे बच्चों को वाकई समझ आया कि नहीं। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई कांट साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम। टीचर ने पिछली बार बताया था जो साउंड है हमारी वो अपने सोर्स से जब चलती है, सोर्स से, और वो लिसनर के कानों तक तभी पहुंच पाती है अगर बीच में वैक्यूम वैक्यूम ना हो, मीडियम हो। यहां से यहां तक कभी उसके कानों तक पहुंच पाएगी अगर यहाँ मीडियम हो। वैक्यूम होएगा तो साउंड नहीं प्रोड्यूस, पहुंच ही नहीं पाती। और उसने पूछा इसका वाई, क्यों, इसका क्यों। एनीबॉडी क्लास में कोई ऑप्शन कौन सा पिकअप करोगे। देखो, रीड दी ऑप्शंस। फिंगर आपको सिखाया तो था प्रोसीजर। जो बच्चे सोचते हैं फर्स्ट ऑप्शन 1 फिंगर, जो सेकंड ऑप्शन 2 फिंगर। शाबाश, व्हाट इज योर ऑप्शन। बटलर के बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। ओके, और अरविंदो ने भी मुकाबला कर लिया फर्स्ट ऑप्शन का। डेस्करेट में कोई बच्चा नहीं बता पा रहा। डेनेट में एक बच्चा फर्स्ट फिंगर कह रहा है। अलेजेंड्रो में कोई बोल ही नहीं रहा। एमर्सन के बच्चे तो शरारत करने लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। तो बेटे इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब हम देखते हैं ये कैसे। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटे। ऐसा होता है जब सोर्स से साउंड ऐसे जाती है ना, इधर को साउंड, तो बीच में जो मीडियम होता है ना, मीडियम, उसके पार्टिकल को वाइब्रेट करवाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेशन करवाती है तभी साउंड बीच में से गुजर पाती है। अब मान लो यहां पर मीडियम ही नहीं है। मीडियम का मतलब एयर भी हो सकती है, या फिर पानी हो सकता है, या फिर कोई गैस हो सकती है। वैक्यूम का क्या मतलब होता है। वैक्यूम का मतलब होता है इनमें से कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं, टोटली एम्प्टी स्पेस, टोटली एम्प्टी स्पेस, उसको बोलते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम का एक नाम और भी याद रखना सभी बच्चों ने, फ्री स्पेस। तो जब वैक्यूम होएगा, कोई मीडियम ही नहीं होएगा, तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। और मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे तो सोर्स से लिसनर तक साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाती। साउंड जो होती है वो एक वो एक इलास्टिक वेव होती है। कौन सी बच्चे, इलास्टिक वेव। इसी का एक नाम और भी है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। साउंड अब बच्चा मेरे बोलेगा सर ये क्या होती है। जो वेव ऐसी हो कि बिना मीडियम के ट्रेवल ही ना कर पाए उसको इलास्टिक वेव या मैकेनिकल वेव बोलते हैं। साउंड तभी ट्रेवल कर पाती है अगर मीडियम होगा, क्योंकि उसने अंदर से गुजरते वक्त, प्रोपेगेट करते वक्त मीडियम के पार्टिकल को कंपन करके देनी होती है और फिर खुद आगे निकल पाती है। जब मीडियम ही नहीं होगा तो मीडियम के पार्टिकल को कंपन कैसे करवाएगी, इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो। समझ आया बच्चे, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डाउन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को दो ग्राफ दे रखे हैं बेटे। एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ध्यान से देखना। एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, इधर टाइम और इधर एम्पलीट्यूड, कंपन करने वाली चीज का। और एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे,
ठीक है, इसको नंबर 1 बोल दे, ए ग्राफ। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, इधर टाइम, इधर एम्पलीट्यूड, ये इसको बी ग्राफ। हमें पूछते हैं इन दोनों ग्राफों में से कौन सा ग्राफ लाउडर वॉइस को, लाउडर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ऊंची आवाज, लाउडर साउंड कौन सी है, इधर या इधर। जो बच्चे कहते हैं ए ऑप्शन, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, 1 फिंगर। जो बच्चे कहते हैं बी ऑप्शन, वो विक्ट्री का साइन बनाएंगे, 2 फिंगर्स। शाबाश। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। दो बच्चे, दो दो फिंगर, 2 फिंगर। डेस्करेट में 2 फिंगर, फिंगर। एमर्सन के बच्चे हरी अप, इन दोनों में से ऊंची आवाज कौन बताते हैं। एमर्सन में, सिवाय एमर्सन के सभी बच्चे बता रहे हैं, और ये आंसर सेकंड वाला करेक्ट है, करेक्ट, शाबाश, ये ऊंची आवाज बताता है। अब हम इसको समझते हैं कैसे, ध्यान से सुनना है, समझते हैं इसको कैसे। देखो बेटे, योर अटेंशन। अगर मैं आपको एक वाइब्रेटिंग चीज ले ले, ये वाइब्रेटिंग चीज अपनी मीन पोजीशन से यहां तक जाती है कंपन करते हुए, एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम तक गई, और इतने डिस्टेंस को, ये कितना डिस्टेंस है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कंपन करती हुई चीज अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जब जाती है तो कितना दूर जाती है, दोनों पोजीशनों के बीच में जो गैप है उसको एम्पलीट्यूड ए से लिखते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। अब जब भी कभी ग्राफ दिखाया जाए तो ये जो हाइट वाली चीज होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आपने देखा सेकंड केस में एम्पलीट्यूड कहीं ज्यादा है, फर्स्ट केस में छोटा सा। तो याद रखना, जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस, वो उतनी ही ज्यादा होती है जितना एम्पलीट्यूड का स्केयर ज्यादा होता है। स्केयर लिखा है टीचर ने, ज्यादा। अब नेचुरली स्केयर तभी ज्यादा होएगा जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होएगा। जैसे 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25। जितना एम्पलीट्यूड का स्केयर ज्यादा होता है उतनी लाउडनेस ज्यादा होती है। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, मोर द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड, larger will be the loudness, and scale of anything can be larger only if base is larger, यानी amplitude is larger। क्योंकि a डैश a के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसलिए b वाली साउंड लाउडर साउंड बताएगी और a वाली साउंड धीमी आवाज बताएगी। इसको फीबल साउंड बोलते हैं, फीबल साउंड, धीमी आवाज। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश, बहुत अच्छे। डाउन। बेटे डेस्करेट के बच्चे थोड़ा सुस्त लग रहे हैं मेरे को, ध्यान से जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने अपने बच्चों को बुला रहा हूं, मेरे पास एक बच्चा चाहिए मेरे को। अरिस्टोटल में हरकीरत सिंह, अरिस्टोटल में हरकीरत सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक। शाबाश बेटे। अरिस्टोटल में हरकीरत सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक एंड स्विच ऑन द माइक of your class and read the fourth question। नहीं आ रहा, डरता है बच्चा। ये कौन है बच्चा भाई, आ क्यों नहीं रहा। is not there. नो प्रॉब्लम, बैठो बैठो। फिर मेरे को अरिस्टोटल में एक और बच्चा है, सिमरप्रीत सिंह, वो आ जाए माइक। अरिस्टोटल में सिमरप्रीत सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक। आ ही नहीं रहा।
Sir, that students are in a general. ओके, बैठ जाओ। दोनों बच्चे एब्सेंट हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ता हूं। हमारे पास दो ग्राफ दे रखे हैं, और ये दोनों ग्राफ कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों ग्राफों में से कोई एक ग्राफ ऐसा है जो चर्पिंग साउंड ऑफ द वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी पक्षियों के चहचहाने की आवाज को। वो इन दोनों में से कौन सा है? पहले आपके टीचर ग्राफ बनाते हैं। देखो, ग्राफ ऐसे है। एक ग्राफ है ऐसे, इधर टाइम, इधर एम्पलीट्यूड, इस स्केल पे, वर्टिकल स्केल पे सेंटर में 0 होता है बेटे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो यहां पर तो इसने ऐसे दिखाया। ओके। और दूसरा ग्राफ है, ये ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ है बेटे। इधर टाइम, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, और इसका ग्राफ भी उतना ही ऊंचा है जितना ये है, लेकिन इस ग्राफ में इसने ऐसे ऐसे काफी साइकिल दिखा दी। अब ये बोलता है इनमें से कौन सा फीचर बता रखा है, इस ग्राफ में कौन सा फीचर समझाने की कोशिश करी हुई है साउंड की। एनीबॉडी, एनीबॉडी जो जवाब दे सके। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है बटलर में, आ जा बेटे, आ जाओ माइक पे आ जा। बटलर में येलो टी शर्ट स्पेक्स वाला बच्चा, सिर्फ एक बच्चा सारे सेक्शनों में से। देखते हैं क्या बोलता है बेटे, कौन सा करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बटलर, माइक ऑन करो पहले, बोलने से। सर हाँ, लाउड, हाँ जी, सर लाउडनेस। बैठो। इस बच्चे ने बोला सर लाउडनेस। नहीं बेटे, इस बार लाउडनेस नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। क्यों? देखो, जितना एम्पलीट्यूड इधर है उतना ही एम्पलीट्यूड इधर है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो, इसका मतलब दोनों आवाजें बराबर की ऊंची हैं। ये नहीं बता रहा इस बार वो, इस बार कुछ और बता रहा है। बताऊं क्या? देखो, आप देखो कि यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर इधर से ऐसे जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। इधर भी देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और यहां से नेगेटिव हाफ साइकिल। जितनी देर तक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसको वन साइकिल बोलते हैं। और उतनी ड्यूरेशन के लिए जो टाइम ये लग जाती है ना, ब्राउन कलर वाला टाइम ड्यूरेशन यहां से लेकर यहां तक, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड। तो आपने देखा बी ग्राफ में टाइम पीरियड बहुत कम है। कैसे पता लगा? यहां तक टाइम पीरियड है, अगर आधा ही साइकिल दिखाया होता है यहां तक, ये जहां तक टीचर ने पिंक कलर की लाइन बनाई है, पिंक की, यहां तक के टाइम पीरियड को टी बाय हाफ बोलते, आधा टाइम पीरियड। अब इधर देखो, इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही यहां तक चला गया, तो इसका मतलब यहां पर टाइम पीरियड हाफ दिखा रखा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। ये वाला रेड वाला टाइम पीरियड हाफ, उसके मुकाबले इसको टी डैश कह देते हैं, ये वाला उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर अब अगर टी डैश का हाफ ज्यादा है तो इसका मतलब टी डैश भी बड़ा है टी बी से। अभी अभी टीचर ने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ये वाली कम है और इधर वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये ज्यादा, ये कम। क्यों? जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि फार्मूला ये कहता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तभी तो मैंने फार्मूला लिखा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, टीचर ने समझाया था पिछली बार, उसकी आवाज सुनने में कानों को तीखी लगती है। श्रिलनेस इज हायर। जैसे आपके
अगर मम्मा पापा की आवाज आप ध्यान से याद करो तो मम्मा की फ्रीक्वेंसी आवाज की ज्यादा है, पापा की कम है। कैसे पता लगा? जब मम्मा या पापा दोनों कभी डांटते हैं या जनरल बात भी करते हैं तो मम्मा की आवाज कान में ज्यादा तीखी लगती है, पापा की कम। क्योंकि जेंट्स की फ्रीक्वेंसी से दुगनी फ्रीक्वेंसी होती है लेडीज की, डबल, इतनी ज्यादा। अब आप मेरे को बताओ, अगर सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स होती है, तो क्या उनकी आवाज कानों में चुभती है या नहीं चुभती? बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर, पक्षियों की आवाज बड़ी तीखी होती है सुनने में, इसीलिए तो हमारी सुबह आंख खुल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो यहां पर दोनों केसों में फ्रीक्वेंसी हाई किसकी है? जिसका टाइम पीरियड छोटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो आप कहोगे सर, पहली बात तो इन दोनों ग्राफों में फ्रीक्वेंसी का करेक्टर रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा, ये वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, इसमें आवाज तिखी होगी, तो चर्पिंग ऑफ द वर्ड्स बी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ए ग्राफ नहीं करेगा। अगर बच्चा बोले सर फिर ए ग्राफ कौन सी आवाज रिप्रेजेंट करेगा? ए ग्राफ वो आवाज रिप्रेजेंट करेगा जो कानों में नहीं चुभती। सर जैसे जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, अब बादलों की गड़गड़ाहट है ना, वो वो कभी भी बादल गड़गड़ाते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि कानों में ऐसे हाथ रख लो, नो, कभी नहीं करते, क्योंकि वो आवाज चुभती नहीं है। अगर छोटा बच्चा यहाँ खड़ा हो, हम उसकी टॉफी छीन लें तो छोटा बच्चा किलकारी मारेगा। जो छोटे बच्चे की किलकारी होती है, इन्फेंट की क्राई, किड की क्राई, उसको हम बोलते हैं, वो ऐसे कान रख लेते हैं, तीखी आवाज, उसको बोलते हैं अपनी टॉफी वापस ले ले, किलकारी मत मारो। तो जो छोटे बच्चे की चीख होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है क्योंकि कानों में चुभती है। और जो बादलों की गड़गड़ाहट, शेर की गर्जना, बुलेट मोटरसाइकिल का स्टार्ट होना, इनमें से कोई भी आवाज चुभती नहीं है कानों में, ये सारी लो फ्रीक्वेंसी की होती है। हाई वाली बताएं, बच्चे की किलकारी और मच्छर का कान के आसपास बिन बिनाना, बजिंग साउंड ऑफ द मॉस्किटो, ये सारी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती है। गॉट इट? शाबाश, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं सिवाय अरविंदो सेक्शन के। अब हम पढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सभी रीड करो एक बार, रीड इट। एक बच्चा है बटलर में, अर्शजोत सिंह, बटलर में अर्शजोत सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक। अर्शजोत सिंह इन बटलर सेक्शन। बेटे बटलर में पूछ रहा हूं मैं, बटलर में, बटलर में अर्शजोत सिंह बच्चा है एक, वो माइक पे आ जाए। बेटे अगर कोई एब्सेंट है बच्चा तो मेरे को बताओ, बटलर में अर्शजोत सिंह आना तो पड़ेगा, जिसको मैंने नाम ले लिया, बैठे नहीं रहे। सर कोई बच्चा नहीं है सर। नाम कोई लिखा हुआ है? ओके कोई बात नहीं, बैठो फिर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या समझाता हूं बेटा, बोलता है यहां पर एक टेबल है, टेबल, और यहां पर एक दूसरा टेबल है, ओके। अब इन दोनों टेबल्स के ऊपर, एक टेबल के ऊपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल का स्केल है, ये बना दिया हमने, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल का स्केल।
30 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल का स्केल इधर से हाथ से दबाया हुआ है और हम इसको ऐसे नीचे को दबा के छोड़ेंगे, ये वाइब्रेट करेगा, आवाज पैदा होगी इससे। और दूसरे टेबल के ऊपर इससे दुगना लंबा एक और स्केल है, वो भी हम दिखा देते हैं। ये पड़ा 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। शाबाश बच्चे। तो बस इसमें फटाफट से सुन लो, जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो वो उतना स्पीड से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। 630 सेंटीमीटर वाला लॉन्ग जल्दी वाइब्रेट कर पाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, इसका फ्रीक्वेंसी नोट कर लो बच्चे। उसके बाद हम फिर बाकी की क्लासें अगली बार लगाएंगे। इंग्लिश के मैम आ गए हैं, अब वो आपका लेक्चर ले। बाय बाय। Hello everyone, good afternoon. So you can put all that you had of your physics or maths, whichever class was going on, at least physics, and take out your sheets for English. You can take a breather. Okay, everybody, you can take a breather for 1 minute or 2 minutes, then we can start. Okay, then we can start the class. So everybody is ready for the class? If everyone is ready, please, I want some indication. Ready? Okay, there are a few children. Thank you for letting me know. So we are going to start with clauses. Okay, today you have to do these clauses. And for that, you have an exercise here. And there is and if you can see at the top, they have written, I have just given you a small revision. Okay, it's like a review. You go through it, you refresh everything about clauses. Okay, that what are clauses? There is a main clause, which is not always independent. There is a subordinate clause. Okay, then how can you recognize a clause in a sentence? So okay, in a sentence, how will you recognize? So these are, everything is given. So every sentence must have at least one main clause or independent clause. Okay, so main clause is independent clause. So it makes complete sense. As subordinate clause or dependent clause, which cannot stand alone. That means it will not make complete sense. Okay, it must always be attached to the main clause. And how it will be attached to the main clause? It usually is introduced by a subordinating conjunction. So it will be either a subordinating conjunction or it will be a relative pronoun. Okay, so it will be
a relative pronoun. You know, relative pronoun is like who, which, that, what, whose, whom. Okay. Or it can be a subordinated conjunction. We recently did as, since, because, if, whether, after, before, when, while, though, that, unless, etc. So this is how you're going to identify which is the main clause and which is the subordinate clause. So basically main clause makes complete sense. Okay, it stands independent, while subordinate clause cannot stand independently, and it will always begin with a conjunction. Very easy. We have this here. Identify the main clause and subordinate clause in the following sentences. Write MC against main clause and SC against subordinate clause. The first one has been done for you. When she spoke. Okay. When. See, now when is what is like when. Okay. So when it is introduced with when. Okay. And she spoke doesn't make complete sense. Her annoyance was apparent to us all. Her annoyance was apparent to us all means she was annoyed, and apparent means clearly visible. We could make out that she's annoyed. So this is the main clause, and it is when she spoke. Okay, that is the subordinate clause. Aravindo classroom. Aravindo classroom. Hello. I'm talking to Aravindo classroom. I'm seeing a lot of talking is happening and nobody is doing any work or paying attention. The first answer will come from the middle row. The girl sitting on the first bench in yellow t-shirt. The first answer will come from Aravindo house. Two girls were sitting, one in red t-shirt and one in yellow. Yes, the girl who stood up. You are going to give me the first answer. Ma'am, good afternoon. Good afternoon, bache. Follow. Ma'am, first answer is he said main clause, that he was giving me a friendly warning, subordinate clause. Okay, so very good. Now see, we could have even identified if this is a noun clause or adverbial clause or adjectival clause. Okay, we could have identified this also, but I don't want to make it too much hodgepodge for you people. So we will just identify the clauses. This can be done as a practice for you later on. Like once you identified the subordinate clauses, you can again identify which kind of clause is it. Is it a noun clause? Is it an adverb clause or an adjective clause or relative? Okay, adjective is also called relative clause. So that you can do later as an additional practice. Okay, right now we will do this and then we'll move on to the next one. Okay, she was in a frenzy because 15 people were coming to dinner. She was in a frenzy. Yes, Arabindo's, the girl in a green t-shirt, she has raised her hand. Come. Next, I'm moving to Descartes. Next class is Descartes. Ma'am, She was in a friendly clause because 15 people were coming to the dinner, subordinate clause. very good. She was in a frenzy. So we know frenzy is like, in a very disturbed state of mind. Like, when you are like irritated and you are worried and you are literally you are anxious. That means a lot of anxiety. So that's called kind of a frenzy. Okay. Everything, all these things mixed together. And because it is introduced with because 15 people were coming to dinner. Okay, next. I thought that his behavior was rather forward. I thought that his behavior was rather forward. Descartes, who's going to come forward? Middle row, second bench. The boy sitting next to the boy in red t-shirt. Blue t-shirt. He's wearing a blue t-shirt. Yes, yes, you got it. Yes, yes, he will come. I thought that his behavior was rather forward. Don't ask the main clause. Could you please Unless you repeat again? I could not hear it.
Don't ask me the opinion main clause unless you are ready for a frank answer spontaneous. We were still on third one. We were still on third one. I thought is the main clause. I thought that subordinate clause is behavior was rather forward main clause. There is lot of noise coming and I'm unable to understand because everything is like put together. The sound from other children and your voice is cracking too. Anyway, I thought, thank you, Beta, you can go back. Is the main clause, I thought. Okay, so it makes complete sense that I was thinking about something, that his behavior, always introduced with a conjunction or with a relative pronoun. So here we have conjunction that his behavior was rather forward. Next, don't ask his opinion unless you are ready for a frank answer. Don't ask his opinion unless you are ready for a frank answer. Someone from Deneth. Deneth. Okay. On my left, I can see a child sitting in yellow t-shirt. Come forward. Yes. A child. Yes. The boy who just turned around. Thank you, sir. Thank you. Yes, he's the boy. No, the one. Okay, you come. Don't ask his opinion. Bache, what's going on? Don't waste time. Don't ask his opinion unless you are ready for a frank answer. So don't ask his opinion. Yes. A fortune told her main clause that she would marry a handsome subordinate clause. Okay. So you didn't like the earlier sentence? Very good. But it is absolutely right. Good. Okay. Our fortune teller told her. Who's a fortune teller? Jyotshi. You must have come around this word. People who can predict your future. Okay. जिसको हम हिंदी पंजाबी में ज्योतिषी बोलते हैं. So that is a fortune teller. Okay. So here is a person who told her that she would marry a that. Okay. And the first one was don't ask his opinion. That is the main clause. Unless you are ready for a frank answer. That's a adverbial clause. Sorry. Yeah, that's a subordinate clause. Next one. Who will come for the next answer? Anyone from Butler? Butler. Nobody's. It's so easy. I think so. This is the easiest. Okay. Anyone from Aristotle? Aristotle the Great. Okay. I think so. All of you should pounce at the opportunity to come here. Yes, I can see hands raised. Very good. Very good. Okay. Now I don't know whom to call. You decide and come. One of you decide and come. Quickly make a decision. Quick decision. Quick, fast. I have to call out. Okay, middle row. The girl in yellow t-shirt. She raised her hand. Say now. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Beta. Good afternoon. The main clause is the river water passes and through a filter before it is piped to homes is a subordinate clause. Okay. So the river water passes. Okay. That is your main clause. Passes through a filter. That is your main clause. Okay. Before it is piped to homes is your subordinate clause. Okay. Because the river water passes through a filter. So that makes complete sense. अगर उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता तो भी we would have understood that the river water goes through a filter. Before it is piped to homes. Very good. Good answer. Next one. Unless you apologize, we will not take you back. Unless you apologize. Alejandro. Okay, Deneth. Very good. The boy who raised his hand. Aja beta fatafat. Yes, come. Very nice. It is always so heartening for the teacher too when you raise your hand. And you should all the time because it is so good for you. Yes. Unless you apologize, subordinate clause, we will not take you back main clause.
Okay. Thank you. Nice. Unless you apologize. And all of you just try to see how I speak, because I know we all have, like, a great Punjabi accent, which is not anything wrong, but we would like to improvise on it. So everybody see, we want a neutral accent. Okay, when we speak a language, we want a neutral accent. Okay, next. Although I knew no one at the party, I had a great time. Although I knew no one at the party, I still had a great time. So, okay, Arabindo, yes, the boy in yellow t-shirt who's raised his hand. He's sitting in the middle row at the back, one of the back seats. Yes, come forward. Although I knew no one at the party, okay, I had a great time. I had a great time stand alone. Okay, meaning understood. Ma'am, good afternoon. Yes, follow. Good afternoon, beta. Ma'am, although I know no one at the party, subordinate clause, and I had a great time main clause. Very good. Perfect. I'm so very happy. All the 8 were correct. And how many of you got all the 8 right? How many of you? I'm sure it's going to be a huge number. Oh, very good. I can still see, like, oh, Aristotle has the greatest number of hands raised. Very nice. Very nice. Okay, good. Now let's move to the next one. Okay, state whether the subordinate clause in the following sentences is an adjective clause. Adjective clause is also known as relative clause. Okay, so they are one and the same. दो नाम है, जैसे आपका एक घर का नाम है और एक स्कूल का नाम. Adverb clause, it is also called adverbial clause, and noun clause. Noun clause is only known by a single name, noun clause. Okay, so adjectival also on relative, same. So where they have gone is a mystery. Where they have gone is a mystery. Okay. Which kind of clause is this? So tell me, what does a noun clause look like? It often starts with that. लिख लो. ये लिख लो. Noun clause starts often. Okay, not 100%, but 98.9%. It starts with, noun clause will start with that, whether, बार वाला weather नहीं, the other whether. Whether, if, okay, what. So this is starting with what? Where they have gone is a mystery. Okay, so it is who I could see a lot of hands raised. Anyone from Emerson? Okay, the boy who's sitting in the last corner, red t-shirt, who raised his hand, come forward. Very good. Aajo, jaldi se aajo. One who's sitting on my right, last bench, the boy in red t-shirt who raised his hand. Okay, now you come. Yes, come. The first one, where they have gone is a mystery. Which question? Ma'am, which question? Gone is a mystery. Okay. Now see, you have to find the subordinate clauses in all these, and then you have to tell whether these subordinate clauses. दोबारा पूछो बेटा. If you are going to talk to anyone, you are. What? Are you going to tell me which clause is it? First, you all have to identify the subordinate clause in all the sentences.
That you will keep with you only, and then you will let me know what kind of clause is it. Okay, what type, whether it is an adverb clause or a noun clause or like adjective clause. वो कौन सा clause है? So who will come and tell me? Who will come? Ma'am, he was giving me a friendly warning. Ma'am, it is a subordinate clause. He was giving me a friendly warning. बेटा ये तो हमने कर लिया, आप सोए हुए थे. This whole exercise is over now. Wake up. ये पकड़े गए हो आप, like you were sleeping in the class. We have moved on. The first exercise, 8 sentences have been completed. We have moved on to the next exercise. I will go for a walk. Huh? I will go for a walk. I will go for a walk. No, state whether it is the second exercise. The first 8 sentences are over. State whether the subordinate clause in the following sentence is an adjective clause, adverb clause, or noun clause. This is like you consider sentence A. Where they have gone is a mystery. Where they have gone is a mystery. Okay. So where they have gone is a mystery is a, yes, Arabindo, yes. Blue t-shirt girl in the middle row will raise her hand. Quick, fast. Okay, thank you, Beta. You can go back. Ma'am, it is noun clause. Perfect. Very good. Can you tell your friends how did you find it is a noun clause? Can you tell? Ma'am, we can repeat the verb with the it. Very. Yes. So next one. I will never forget what you just told me. I will never forget what you just told me. So I will never what you just told me. See, noun clause can be like the subject, it can be the object, anything. Okay. So here I will never forget. Full sentence, like it's independent clause. What you just told me is like it is a subordinate clause. And normally noun clauses are like they act as either the subject or the object. Okay, so it is acting as an object. So what you just told me is like a noun clause. Okay, write down. And which verb? They will always modify a verb. Okay, and here the verb is forget. The object of the verb is forget. Next, he asked me if there was anything more to do. He asked me. It starts with if. So I just gave you noun clause. What? So what is it? How will you identify it? He asked me if. I just now made you write 4 things: that, whether, where, if, to identify noun clauses. Okay. So he asked me if there was anything more to do. What will it be? Emerson, you have been very quiet today. I'm expecting one of you to give answer to this question. Yes, Emerson? Who's brave enough to come forward and answer? But how do you enjoy a class sitting quietly? I don't think so. That's going to be fun. We have to make a class like real fun. The boy on my right, he's wearing a red t-shirt. Can you please get up? Yes. Who just woke up from some thoughtful process. So he asked me if there was anything more to do. What? Could you please repeat? He asked me. That makes complete sense. So if yes, Emerson, aajo beta, aajo. You're sitting in the middle row, last bench. Come. Thank you, beta. You can go back. Yes. And be ready with the next question. Aap bolo, he asked me if there was anything more to do.
What happened to you two? Could you please speak? I can't hear you. Yes. No. हाँ बोलो बोलो. Third verb आएगा. Adverb clause में How? Adverb clause में क्या होता है? First and foremost, उसकी सबसे ज्यादा identification कैसे है? Adverbial clause starts with a coordinating conjunction. Okay? It starts with a coordinating conjunction. And second, it modifies a verb. यहाँ पे क्या है? He asked me if there was anything more to do. तो यहाँ पे verb कौन सा था? Object है ये. Okay, so it is noun clause. It is a noun clause. It is a noun clause. He is saving money so that he can go to the university. He is saving money so that he can go to the university. Very easy to identify which clause. Yes, which clause? Adverb clause of reason. Okay. He is saving money. Why is he saving money? Reason. So that he could go to the university. Okay. So adverb clause of reason. And next, I could not sleep well because it was too hot. I could not sleep well because it was too hot. Because, yes, Arabindo, the girl in green t-shirt, yes, come forward and answer. Yes. I could not sleep well. Okay, standalone, independent clause. Reason, because it was too hot. Starts with a, yes, Bolu. It is adverb clause. Very good, adverb clause. Okay. So, next. As he is my supervisor, I have to listen to him. As he is my Arabindo. First bench, yes, red t-shirt girl, come. Middle row. As he is my supervisor, I have to listen to him. It's adverb clause. Very good. Adverb clause of reason. Okay. Because it starts with the conjunction as he's and gives a reason. Why is that thing happening? I congratulated the boy who had won the first prize. Now, whenever you have adjective clause, you have who, which, that. It starts with who, which, that, and it will always talk about a noun. It will always talk about a noun. So here it is talking about a boy. I congratulated the boy. Which boy? Who had won the first prize? Yes. So it is an which clause? Emerson? Anybody would like to answer? Alejandro? Please come forward. Okay, Butler. Aristotle. Anyone who would like to come forward and answer this? Yes, come forward. The girl in red t-shirt who just raised her hand. Aaja. Aaja bache, fatafat. Okay. I congratulated the boy who had won the first prize. So it will always talk, it will give you more information about the noun. And it will start with who and follow. Adjective clause. Adjective clause will always start with who, which, that. Okay? Who, which, that. And it will always give you additional information about a particular noun. So here the noun is boy. Okay? So we know. I apologize to the girl whose bottle I had broken. Whose bottle I had broken. I apologize to the girl. Again, more information about the girl. Okay? It's telling you more about something about the girl. Yes, Aristotle. On my right, again, the girl in red t-shirt. On my left, I'm saying right. On my left, your right. Yes. I apologize to the girl whose bottle I had broken. Adjective clause.
Very good. Again, it is adjective clause. Okay. Next, I will talk to you when I have time. When I have time. Okay, Arabindo, first bench, middle row. I will talk to you when I have time. Adverb clause. Very good. Okay, adverb clause. Again, reason. Okay, sorry, time. Okay, so adverb clause of time that I have whenever I have time. Okay. Next is Supriya, who studied medicine at university, actually wants to be a wildlife photographer. Supriya, who studies medicine at university. Supriya, who studies medicine at university actually wants to be a wildlife photographer. Okay. So which is the subordinate clause here? So basically, this is the subordinate who studies medicine. Okay. Supriya, who studies medicine at university. Okay. This is your subordinate clause. Now tell me, Supriya actually wants to be a wildlife photographer. This is extra information. Okay. That is why it is like, this makes sense. This is the main clause. Supriya actually wants to be a wildlife photographer. This is your, sometimes these kind of little tough questions can also come. Okay, this is your subordinate clause. So what is it? It is giving extra information about. So what is it? When you get extra information about a noun, Supriya is a noun. You're getting extra information. What will it be? Okay, Arabindo's middle row, second bench, blue t-shirt girl. Yes. Ma'am, it is adjective clause. Very good. It is adjective because it's giving extra information about a noun. Okay. Supriya, who studied, but here it was a little bit of a challenge because this is like the main. Supriya actually wants to be an independent wildlife. This is your main clause, and here you have the other clause. Okay, so it is in the middle. So that was a little bit of a challenge. I hope you all did well with this particular worksheet. Now you have a mixed bag. I want you to do it on your own, quickly, fast. Fast. Fatafat karo. Okay, and then we will talk about it. You have like 4 or 5 minutes to finish this. Every question is different and they have options. You have to pick the right option. You have to pick whatever you want to. Okay. So start doing it. The first one is, which of the following sentences contain an independent clause? So which contains an independent clause? यहाँ पे 4 options है. You have to choose the right one. Quick. Grammar is very important because when we give all the international exams, this is what we get. Okay, SAT, TOEFL, IELTS, PTE, ACT, whatever you want to give. And I'm sure even in India, bank exams, you go for MOOT. MOOT is like, you go for your CAT exam, you go for any exam. These kind of questions are asked. It is very important to learn now. Otherwise, again, you'll have to go through the process and it will become much more tougher. Okay. Arabindo is steaming.
Aravindo is keen. What about Deneth? I want to see some hands raised from Deneth. Yes, Deneth. Alejandro, today you are very quiet. Yes, someone from Alejandro. That will make me very happy. Emerson. Aristotle. You know, I am always a great fan of the philosopher Aristotle because he introduced the reasoning like ethics. Okay, question on ethics. He was the one who started this. He was the founder of this philosophy, which was then carried forward by Plato and then by, first it was Aristotle. No, it was Socrates, then Plato, then Aristotle. And you know, he was the teacher of Alexander the Great. So if you carry a huge burden on your shoulders, itna bhari bhargam naam hai. Yes, Aristotle, the first one. Who will come and who will answer this? Okay. On my right, last bench. Come forward. Aja. Yellow t-shirt. Which of the following sentence contains an independent clause? Although it was raining, because I was tired, I will go for a walk when the sun sets. Option C. There is too much of, okay. Which one? Which one? Answer? MC option. C. Very good. Answer C. I'll go for a walk. Complete sentence. Okay? I will go for a walk. Next is identify the dependent clause in the following sentences. In the following sentence, whenever I visit the city, I enjoy the park. Whenever I visit the city, I enjoy the park. So which one is it? You know, always starts with a dependent clause will always start with some kind of a conjunction, a relative pronoun, something like that. Okay, Aristotle again. Okay, on my left, blue t-shirt girl who has raised her hand. Girls always outsmart boys. They always do that. Yes. Option A. Which one? A. A. Yes. Whenever I visit the city. Whenever I visit, because it's not an independent clause, it's a dependent clause. Very good. Third one. Which sentence demonstrates the correct use of a subordinate clause? Which sentence demonstrates the correct use of the subordinate clause? Okay? They are all subordinate, but they are written in a different way. Okay? Who will answer this? Someone from Amazon? Okay, I'll call out. Middle row, second bench, red t-shirt. Come out. Yes. Which sentence demonstrates the correct use of subordinate clause? I went to the store, I needed groceries. After I finished my homework, I watched TV. The dog barked loudly, I enjoy ice cream. Very easy. Yes, Emerson? And the dog barked loudly. अरे ये तो सीधा independent clause हो गया. Dog barked loudly. So it is independent. Okay? It is like a main clause. So which one will you say? Because we are asking for a sentence subordinate clause. Subordinate clause always begins with a conjunction, subordinating conjunction, or with relative pronouns or something like that. So which one will be that? Anyone from Emerson only? Anyone? Any brave heart to come forward? Yes, brave heart. Yes, follow. After I finished, yes. After I finished my homework, I watched TV. Okay, very simple.
This is the most appropriate subordinate clause. Next one, select the sentence that includes an adverbial clause. You know how to choose an adverbial clause. You know that. कैसे adverbial clause तुम find करते हो? Okay, Aravindo, okay, the girl in yellow t-shirt, come, first bench. Adverbial, which one is an adverbial clause? B option. B option. That's very good. If, because if condition, okay, it is condition. If you study hard, you will pass. Adverb clause of condition. We have adverb clause of manner, time. Then we have condition, reason. Like we have so many, 6 adverb clauses. Okay, very easy. It's not get chair to yaad nahi hoenge. Very easy. And next, 5th one. In which sentence is the relative clause used correctly? Now, relative clause we know is again adjective clause. Okay, so you don't have to go yes. Alejandro, I can see a hand raised. Please, the middle row. Even on my left, there are 2 or 3 girls. Come forward. Let me. Option A. A, very good. Sorry, which one is that? A. A. The book that I borrowed was interesting. Yes. The book that I borrowed was interesting. So, book is the noun. उसके बारे में बता रहे हैं. Okay, it continues to tell you more about the book, about the noun in that sentence. Next one. Which of the following is an example of a noun clause? Noun clause. The dog barked loudly. She ran quickly. The book on the table. What you said was surprising. Once again. Anyone? I had seen a lot of hands in, yes, Emerson, very good. Last bench. Yes, come forward. A option. Which one? A option. Yes. You should read the whole sentence also, because that is the way you will keep learning about like more clarity of speaking English. A, B, ऐसे monosyllable इसमें answer नहीं देना. Full statement में या full sentence में you have to tell me. Not like monosyllables or nodding your head. Okay. So the what you said was surprising. What you said was surprising. 7. Identify the correct sentence structure containing both an independent and dependent clause. Very nice. So we'll come forward. Oh, very good, Alejandro. I'm impressed. Last में सबने हाथ ऊपर कर दिया. Very nice. Okay. On my left, the one who's sitting next to the yellow t-shirt, that girl. Yes. Yes, the little one. Nane. Yes, A. Although I was tired, that's your dependent clause, I decided to go out. Contrast. Adverbial contrast, okay? So this is contrast, the although. Yes, next. Which sentence contains an adjectival clause? Simple, absolutely simple. Emerson, okay, on my left. Last boy who's sitting in the farthest corner, blue t-shirt. Yes, the farthest corner of the class. On my left, you're sitting right next to the boy who wears a yellow t-shirt. Ajao. Come, the little one. Yes. Emerson. Okay. A option. Yes, the man is the noun and उसके बारे में वो extra बता रहा है. Who won the race is my brother. So it's adjective. Okay. Perfect. I hope everything is much more clearer now. You all are very smart children. You've done well. And I hope most of you got full right. All those who got everything correct, raise your hand.
Thank you. We had a good class. I hope you had a good time too, and things became much more clearer. So have a good day. See you next week.